Hello everyone, welcome to CHSE concept clarity. पिले माने मो वॉइस समस्त क्लियर आछि कि यदि क्लियर आछि यस कहि दियो ठीक से विजिबल होनी ते पिले माने वीडियो रो क्लैरिटी बढ़े कि देखो आछियो हो ठीक अछि डिस्कशन स्टार्ट करिबा समस्त विजिबल होनी हो ठीक अछि देखो देखो हमर फर्स्ट क्वेश्चन कोन रही छी मु जोरा सब ठीक चिना मारची से सब क्वेश्चन को पढियो बुझियला देखो व्हाई डू इलेक्ट्रिक लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर तीन प्रकार क्वेश्चन अछि गोटे होची इलेक्ट्रिक लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर नले होची व्हाई टू इक्विपोटेंशियल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर नले आ गोटे क्वेश्चन होची व्हाई टू मैग्नेटिक लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बुझियला तो तीन प्रकार वेराइटी क्वेश्चन अछि तेणु कोटा देख एथर जेतु रीजनिंग क्वेश्चन हमरो नुआ करछि एथर को रीजनिंग क्वेश्चन पैटर्न ऐड करछि तेणु कहा ऊपर क्वेश्चन आसीबो आमे ठीक से कहि परनु तेणु तथै फिजिक्स रो जेति कि इंपोर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चन अछि आमे सब को प्रैक्टिस कर देबा बुझियला तेणु ता भीतर जहा परीक्षा लिखिबो आ एते गुडी भी रीजनिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस करले हमर जेमितले कोनो छोटा आईडिया पळे आसीबो एग्जाम ऊपर आमे केमती रीजनिंग क्वेश्चन अटेंड करबा जे कोनो क्वेश्चन पड़थाउ त माने लिख परिबो बुझियला एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन सुनो जो सब लॉ डिस्कशन हेतला काली से यार होची सब कोन स्टेट एंड एक्सप्लेन वाला क्वेश्चन जेंति स्टेट एंड एक्सप्लेन ओम्स लॉ बा स्टेट एंड एक्सप्लेन बायोसावर्ट्स लॉ से बोली बुझियला देखो देखि व्हाई डू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट कह हबो इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट इट वुड मीन दैट देयर आर टू डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेम पॉइंट माने गोटिए पॉइंट रे देयर आर कोन टू डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दीटा डिफरेंट डायरेक्शन रहइबो व्हिच इज नॉट पॉसिबल जोटा पॉसिबल नहीं बुझला द इलेक्ट्रिक फील्ड हैज ए यूनिक डायरेक्शन एट एनी गिवन पॉइंट कौन थाए द इलेक्ट्रिक फील्ड हैज ए को डायरेक्शन यूनिक डायरेक्शन एट ए कोन गिवन पॉइंट intersection would imply contradictory direction violating the fundamental properties of electric field बुझला तो ये तो 3 मार्क क्वेश्चन तेनु ताको टिके अधिक के लिखिया को पड़िबो बुझला तापर नेक्स्ट क्वेश्चन होची व्हाई इज वर्क डन इन मूविंग चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो कारण आमे इक्विपोटेंशियल सरफेस रो प्रॉपर्टी पड़चे नो वर्क विल बी डन इनसाइड द इक्विपोटेंशियल सरफेस बुझला तो तेनु कोन देछि ताहले वर्क डन काहे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पाकरे जीरो थाए तेनु एटा मन रखो एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ए सरफेस वेयर एवरी पॉइंट हैज ए सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल माने इक्विपोटेंशियल सरफेस कोन if the potential at every point inside the surface is equal then it is called equipotential surface माने कोन जदी गोटे सरफेस ऊपर एटा धर गोटे सरफेस सब जगह रे पोटेंशियल कोन हबो सेम हबो ताले हम त कोन कहबा इक्विपोटेंशियल सरफेस कहबा बुझियला तो ताले कोन कहला हो देछि कोन
why is work done is moving on a charge between 2 points on an equipotent surface is zero କାହିଁକି zero ହେଇଥାଏ ହଁ pdf ଦିଆଯିବ ଦେଇଛି ଦେଖ an equipotential surface is a surface where every point has the same electric potential since the potential difference between any two points is zero ताले तांको potential difference कोन हबो zero हबो work done in moving a charge w equal to q del v कोन q del v बुझियला तो becomes zero no energy is needed to move a charge along such a surface तेनु कोनोसी एनर्जी दरकार हबनी कोन move a charge along such a surface माने से सरफेस रे कोनोसी चार्ज को मूव करिया पे एनर्जी दरकार हबनी सेति पे एनर्जी उडी दरकार नै सेति कोन जीरो बुझि पले वर्क डन जीरो किछि एनर्जी दरकार माने नाही माने कोनोसी कार्य हबनी सेति पे एटा जीरो बुझिला तो तापर क्वेश्चन देखो why is the resistance of a metal wire increased when its temperature is increased कोन कहला resistance of a metal wire रो resistance ता कोन हुए ए काहे के इंक्रीज करे when the temperature increase कले काहे तार resistance increase करे देखो when temperature increases atoms in a metal vibrate more vigorously से माने कोन होती vibrate होती more vigorously vibrate होती this causes more frequent collisions with free electron जार मतलब collision माने एकाठी हवा बुझि बेलडी more frequent collisions with free electron सहित कोन करंती more frequently collision हे परंती बुझिला तो increasing resistance since resistance is a measure of opposition to current flow resistance का कोंदी जे current रो flow को oppose करे त कोन कोंदी resistance कोंदी बुझिला तो higher atomic vibration obstruct electron movement raising the resistance जेहेतु vibration कोन होउची higher रहउची atomic vibrations कोन होउची higher रहउची सेति पय कोन हला resistance कोन रहइबो obviously अधिक रहइबो बुझिला ये गला तीनटा क्वेश्चन तब नेक्स्ट क्वेश्चन के जिबा जोरा ठीक मारछि केवल से क्वेश्चन को भल से पढ़ो तब असला why is the magnetic field inside a long solenoid is uniform देखि inside a long solenoid the magnetic field lines are parallel and equal spaced से माने कोन हितांती parallel हितांती बुझबेलाटी parallel हितांती and equal space से माने बिट स्पेस ता कोन थाए equal थाए तापर resulting from the superposition of fields produced by individual terms the field at the center is uniform ताको जो सेंटर जो फील्ड था सेटा कोन यूनिफॉर्म था due to symmetry and constructive interference गोटे था destructive interference और कोन था constructive interference तेनु तांकर जो सेंटर रे जो फील्ड था सेंटर रे कोन था यूनिफॉर्म था काहे कि तांको सिमेट्री जोगु आ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जोगु फ्रॉम ऑल द कॉइल्स सेति पय कोन मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म तब नेक्स्ट क्वेश्चन आसला व्हाई डज ए कॉइल डेवलप an induced EMF when the magnetic flux through it changes कोन देछि according to Faraday's law माने एटी Faraday's law of electrolysis नो एटी Faraday's law of electrolysis नो Faraday's law of electromagnetic induction कोन देछि according to Faraday's law a changing magnetic flux through a coil induces कोन इंड्यूस करे an electromotive force माने EMF बुझिला तो the induced EMF is given by minus d phi by dt the negative sign by Lenz law हमर कोन बतलाई हमर कोन phi कोन ला इन हमर Lenz law कोन कहे Lenz law कोन कहे e equal to minus d phi by dt indicates the induced EMF oppose the flux changes कहला ये कोन करे oppose करे कहा को जो flux changes flux माने magnetic flux कथा कोइ छी बुझला ए देखो एटाला इंपोर्टेंट क्वेश्चन सबटू भल से बुझाउ चेष्टा करो why is Lenz's law a consequence of the conservation of energy बुझला टी एटा very very important question एथरु दीटा एटलीस्ट आसीबो नै परीक्षा रे देखो आमे सब वेराइटी क्वेश्चन प्रैक्टिस करछे जति तो रीजनिंग क्वेश्चन अछि मु सब प्रैक्टिस करे देछि तने जेमितल आसी जो तुम प्रैक्टिस करो नले जदि ताको न आसी से रिलेटेड पड़ला तमे आकु जदि भल से पढितबो तले तमे लिख परिबो बुझला the Lenz's law a consequence of conservation of energy काहे कि देखो Lenz's law states that the induced current oppose the change in magnetic flux हमें जस्ट टिके पूर्व रे जानले कोन करे Lenz's law कोन करे Lenz's law oppose करे कोन करे the induced current oppose the change in magnetic flux the opposition prevents कोन prevent करे continuous energy generation for nothing if the induced EMF added the flux changes it would create energy ये कोन करबो एनर्जी क्रिएट करबो विदाउट इनपुट बुझिला तो तेनु violating conservation of energy सेति पय कोन Lenz's law obeys the law of conservation of energy तमा खाली बारंबार प्रैक्टिस करे मन रखले मन रहि जो बुझिला तो पीडीएफ टेलीग्राम रे मिल जो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन के जिबा
एतरु किछिटा मु डिस्कशन करबे हम खातारे केतेटा नोट करछि तादरो भी डिस्कशन कर देबी तमरा आराम रे हे जिवो बुझिला देछि व्हाई डू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नॉट रिक्वायर ए मीडियम टू प्रोपागेट कोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव काहे की रिक्वायर करनी मीडियम प्रोपागेशन करया पई electromagnetic waves consist of oscillating electric and magnetic field perpendicular to each other कौन होता है electromagnetic wave केमी तैयार हुए oscillating माने दोलन बुझि पले oscillate करबा जेन दोली जेंति जुले सेमते oscillate करबा oscillating काहा को electric and magnetic field perpendicular to each other काहा को electric and magnetic field जोटा कोन परस्पर सहित कोन थिबे perpendicular थिबे these fields sustain each other and propagate in vacuum unlike mechanical waves they do not need a metal medium सेति पई माने कोन करंती कोनोसी metal medium यूज करंती नै सेति पई कोन करंती माने कोनोसी metal medium यूज करंती नाही तापर देला कोन तापर देछि why are microwaves used in satellite communication important question बुझिला तो कोन देछि काहे कि माइक्रोवेव्स यूज्ड इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन माइक्रोवेव को हमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन में काहे यूज करू माइक्रोवेव्स अब हाई फ्रीक्वेंसी तांगर कोन फ्रीक्वेंसी हाई थाए एंड शॉर्ट वेव जहार फ्रीक्वेंसी हमर कम पड़छे हमर जो लैम्बडा इक्वल टू h म्यू बुझ पड़छे ना नहीं एटा हम जो पड़छे डी ब्रोगली वेवलेंथ रे बुझ पेले लैम्बडा इक्वल टू h बाय mv बुझ पेले जो पड़छे फ्रीक्वेंसी एट कोन छै जहार हाई फ्रीक्वेंसी रहबो तार वेवलेंथ लो रहबो बाहर जदी लो वेवलेंथ हाई रहबो फ्रीक्वेंसी लो रहबो कारण इनवर्सली प्रोपोर्शनल बुझ पेलाटी सेति पई एनेबलिंग देम टू पेनिट्रेट द अर्थ एटमॉस्फेयर विथ मिनिमल attention बुझिला तो देयर डायरेक्शनल नेचर रिड्यूसेस इंटरफेरेंस कोन करे तांको डायरेक्शनल नेचर जो कोन करे रिड्यूस कर दे इंटरफेरेंस को रिड्यूस कर दे एंड अलाउस रिलायबल लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नल ट्रांसमिशन तापर कोन देला गॉस लॉ बायोसावर्स लॉ लॉन्ग क्वेश्चन पे इंपोर्टेंट के पे हां गॉस लॉ रो गोटे एप्लीकेशन बायोसावर्स लॉ जो करंट कैरिंग लूप आ गॉस लॉ रो होची जो हमरो लॉन्ग स्ट्रेट वायर जो से क्वेश्चन टा इंपोर्टेंट देखिए व्हाई डज ए कन्वेक्स लेंस बिहेव्स एज ए कन्वर्जिंग लेंस ए कन्वेक्स लेंस इज थिकर एट द सेंटर देन द एजेस पैरेलल लाइट रेज रिफ्रैक्ट टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्जिंग एट ए फोकल पॉइंट द फोकसिंग प्रॉपर्टी मेक्स इट कन्वर्जिंग लेंस तले को प्रॉपर्टी टा फोकसिंग प्रॉपर्टी टा कोन करे ए जो कन्वेक्स लेंस को केमि तैयार कर दे कन्वर्जिंग लेंस भाबरे बुझिला तो तापर आसले नेक्स्ट देखि व्हाई कैन नॉट एक्स-रेज बी डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एक्स-रे काहे की डिफ्लेक्ट होएनी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड द्वारा एक्स-रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव are consisting of oscillating electric and magnetic field हम just के पढ़ ले they do not have any charge unlike electrons or ions electric and magnetic fields only exert forces on charge particle ये कौन करंती जो फोर्स को exert करंती कहां पर चार्ज पार्टिकल ऊपर बुझिला तो तेनो since x-ray are neutral तेनो से माने कोन छन न्यूट्रल they are unaffected by such fields से माने से फील्ड द्वारा अफेक्टेड होंदिनी सेति पय ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन से माने स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करंती ता द्वारा कोन हुए मेकिंग देयर पास इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस बुझिला तापर असला व्हाई डज हाइड्रोजन प्रोड्यूस अ लाइन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन काहे की लाइन स्पेक्ट्रम कोन करे प्रोड्यूस करे देखो हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस अ लाइन स्पेक्ट्रम बिकॉज़ इट्स इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्युपाई ओनली स्पेसिफिक डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स बुझिला when an electron jumps from a higher energy level to lower one it emits a photon of energy equal to the difference between the two levels माने कोन इलेक्ट्रॉन ता मन रखियो सबले तर ग्राउंड स्टेट स्टेबल कहला से कोन गला जतले एनर्जी पाई कि एक्साइटेड स्टेट को पळेबो तले से ग्राउंड स्टेट को केमदि फेरि आसीबो किछ एनर्जी रिलीज करिकि तारे कोन ग्राउंड स्टेट को पुनी फेरि आसीबो को स्टेट एक्साइटेड स्टेट होची हायर स्टेट जोटा होची अनस्टेबल न्यूमेरिकल करेबा हमर जो अनुसार शेड्यूल अछि से अनुसार न्यूमेरिकल करेबा बुझला प्रोड्यूसिंग ए कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन स्पेक्ट्रम इंस्टेड ऑफ अ कंटीन्यूअस वन तापर असला व्हाई आर हेवी न्यूक्ली मोर अनस्टेबल देन लाइटर न्यूक्ली कोन देछि हेवी न्यूक्ली काहे के अनस्टेबल देन लाइटर न्यूक्ली हेवी न्यूक्ली आर मोर अनस्टेबल बिकॉज़ काहे की द रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन प्रोटॉन्स increases with atomic number केमिति बढ़ितांती with atomic number while the attractive nuclear force is short range nuclear force हम पढ़ले कोन strongest force in nature attractive force short range force and independent spin dependent non central non conservative एते कोन पढ़ले तले कोन देला while the attractive nuclear force is short range and saturates in a large nuclei the repulsion between protons overcome the nuclear attraction making the nucleus less stable then कोन करबा nucleus stable less stable कर दबा and more prone to कोन decay बुझला and more prone to decay तब बसला नेक्स्ट क्वेश्चन एटा देछि why is silicon preferred
ओवर जर्मानियम इन सेमीकंडक्टर ए दुटा होचंदी कोन प्योर सेमीकंडक्टर कोटा जर्मानियम और सिलिकॉन जर्मानियम रा बैंड गैप केते 0.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ सिलिकॉन रा बैंड गैप केते 1.19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तला कोन सिलिकॉन इज प्रिफर्ड बिकॉज इट हैज ए हायर एनर्जी बैंड गैप दैट इज 1.19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट as compared to germanium which have band gap 0.74 electron volt making it more stable at higher temperature से कौन करे अधिक स्टेबल कर दिए कोडी हायर टेम्परेचर रे silicon also has lower leakage current and is more abundant and cost effective these property ensure silicon based device operate efficiently more over a wide range तेणु जो प्रॉपर्टी एरा कोन सिलिकॉन बेस्ड हेतिबो डिवाइस बुझि बैलटी ऑपरेट एफिशिएंटली जेतु से माने कोन हेबे गुड कंडक्टर बुझि बैलटी बा तांगर कोन बैंड गैप अधिक तेणु से माने कोन बेसी एफिशिएंट हेबे मेकिंग इट द प्रिफर्ड चॉइस इन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग तेणु सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग रे आको कोन करा जाय प्रिफर्ड करा जाय तापर आउ किछरा रीजनिंग क्वेश्चन मु लिखि छी नोट करछि ताको खाता रे बुझोछि देखो देखो देखी क्वेश्चन कोन द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम रिप्लेसेस द बोर्स मॉडल ताले क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम काहे की रिप्लेस करछि बोर्स मॉडल को द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल इनकॉर्पोरेट्स वेव पार्टिकल डुअलिटी the quantum mechanical models incorporation of wave properties and supersets the Bohr's model सेति पई quantum mechanical model of atom replace Bohr's model बुझिला तब असला light can have both wave as well as particle nature light रो कोन हम जानचे dual nature of light हम जानचे तेनु कोन पई dual nature light behave करे the dual nature of light is fundamental to quantum mechanics ये कहा को fundamental to quantum mechanics describe light as having both wave like and particle like property supporting a बुझि बैलडी properties बुझिला ना नहीं तापर असला the emission of spectrum of hydrogen shows discrete lines कोन कहला electrons transition between fixed energy levels when they emit energy the discrete lines in the emission spectrum result from the electron transition between quantized energy level in hydrogen कोन कहला the discrete lines in the emission spectrum result कोन result करे from electronic transition between quantized energy level in hydrogen बुझला तापर एरा सब मु से पेपर रो डिस्कशन कर देची आ गोटी इंपोर्टेंट क्वेश्चन अछि दि तीनटा मु से तो डिस्कशन कर दोस्ती देखो देची मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर मु कहितली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर ता कारण कोन इफ दे डिड इंटरसेक्ट से माने जदी इंटरसेक्ट हेबे इट वुड इंडिकेट two different direction for the magnetic field as the same point से जहा लिखाइतला आको भी से लिखिबा बुझिला तो तापरे the non interaction of magnetic field lines ensure that there is only one direction of the magnetic field at the point in space तले कोन थाए there ensure that there is one direction of magnetic field रो गोटे डिस्टेंस थाए at any point in the space बुझि बैल तो तेनु से माने कोन परस्पर सहित इंटरसेक्ट करंती नाही तापर देखि तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म कोन देखि तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस इनसाइड द सोलेनॉइड कोन थानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रा कोन थानी पैरेलल थांती आउ कोन थांती इक्विडिस्टेंस इनसाइड ए सोलेनॉइड इक्विडिस्टेंस से थांती द यूनिफॉर्मली ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग सोलेनॉइड इज ड्यू टू द पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस नेचर ऑफ द फील्ड लाइंस बुझिला तापरे Last question, rainbow is formed due to the refraction of light in water droplets. काहे कि एटा कहा जो हुए total internal reflection जो हुए very important objective total internal reflection जो ये जो droplets सब कौन करे चकचक करे reflect करे बुझि पैलटी light refracts reflects and disperse in the droplets to create a spectrum कौन पई से माने refract करंती reflect करंती disperse करंती droplet to create a spectrum बुझिला तो तापर देखो A rainbow is the result of light being refracted and dispersed as it passes through water droplet. कौन हुई? A rainbow is the result of the light. Rainbow टा होची कोन गोटे result. Light रो गोटे result केमिति being refracted हवा द्वारा and dispersed हवा द्वारा as it passes through water droplets. जेतले water droplets द्वारा पास हुए बुझिलाटी ये हला हमर जति सब रीजनिंग क्वेश्चन पाखा पाखी 17 18 हबो तने ए सब रीजनिंग क्वेश्चन को भलो से प्रैक्टिस करबो यार नोट्स मु टेलीग्राम रे अपलोड कर देबे आजी आ जदी कहार कोन बुझिबार अछि कहा परे फिजिक्स रिलेटेड कोन जदी बुझियार अछि ताले पचार
जार जा बुझियार अछि पिलाने पचारो इफ एनी डाउट जहाँ डाउट अछि पचार लॉन्ग क्वेश्चन प्रैक्टिस बदले न्यूमेरिकल क्लास सुनो लॉन्ग क्वेश्चन क्लास कर दबा आ गोटे कोन करबा लॉन्ग क्वेश्चन क्लास करिकी सेइतरे प्रॉब्लम किछिटा गोटे चैप्टर रा डिस्कशन कर देले जेमति रिलेटेड किछि सिलेक्टेड प्रॉब्लम नै जिबा खाली प्रैक्टिस करेगा बुझला काली की किछि रखिबा पर दिन किछि रखिबा कारण पाठ देखो परीक्षा गोटे दिन पूर्व प्रोग्राम प्रैक्टिस कले तुम मन रहिबो तुम डायरेक्ट जाय परीक्षा रे कर परिबा प्रॉब्लम मु सेति में आगुर करोनी फिजिक्स पढ़िले हेबो लास्ट 5 ईयर ना गाइडलाइन जेमति सुनो गाइडलाइन जो अनुसार देछि से अनुसार पढ़िबा पड़िबो आ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करो जे एमसीक्यू 10 वर्ष रो प्रैक्टिस कर दबो तार आराम रे क्लियर हे जो हाँ रिजनिंग क्वेश्चन तो आम जी देजे सब प्राक्ट कर तार भर आसो जहाँ भी क्वेश्चन तार भर आसो भलसे प्राक्ट कर कारण जेहतु नुआ पैटर्न करमती किसी कहनी कारण कहीं कहल कारण ए पैटर्न आगु के परीक्षा है तेणु जेहतु फिजिक्स नुआ पैटर्न कर सब भेराइटी क्वेश्चन से जो रखी रिजनिंग रखी स्टेट एक्सप्लेन ग्राफिक्स भी एनालिसिस कौन पकेबा आम कहीपरनु तेणु सब भेराइटी क्वेश्चन आम प्राक्ट कर तेणु से सब तुम प्राक्ट कर जमी क्वेश्चन आसो आउ कार कौन डाउट अछि कि आउ जदि कार कौन डाउट अछि पचारो ना 3 मार्क रे न्यूमेरिकल से डेरिवेशन वाला कि आसीबन सेमति कि डेरिवेशन आसीबन लॉन्ग क्वेश्चन कौन इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन को आईची लॉन्ग क्वेश्चन होची फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट लॉज आइंस्टाइन इक्वेशन फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट तापर व्हाट इज कैपेसिटर तापर कैपेसिटेंस इज डाइलेक्ट्रिक मीडियम ये गोटे क्वेश्चन तापर किर्चॉफ्स लॉ करंट लॉ वोल्टेज लॉ विथ व्हिस्टन ब्रिज ये गोटे लॉन्ग क्वेश्चन गॉस थ्योरम रो बा गॉस लॉ रो जो लॉन्ग स्ट्रेट वायर सेटा गोटे लॉन्ग क्वेश्चन आ बायोसावर्ट्स लॉ रो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ए पांचटी भलसे प्रैक्टिस करो जेमिति क्वेश्चन आसीबो हां कोन डाउट अछि पचारो हाँ गॉस लॉ रो सेटा पड़ियो स्ट्रेट वायर जोटा हाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंपोर्टेंट फर्स्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट आगे सेटा पड़ियो जेमिति से क्वेश्चन टा पड़ियो व्हाट इज फोटो इफेक्ट लॉज ऑफ आइंस्टाइन इक्वेशन हाँ फोटो इफेक्ट कंपलसरी आसीबो तीनटा लॉन्ग क्वेश्चन मु काली भी कहिथिली आज भी कहूची तीनटा लॉन्ग क्वेश्चन भलसे प्रैक्टिस करले जेमिति दीटा पाइजबो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किर्चॉफ्स लॉ व्हिटन ब्रिज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक मीडियम तुम एग्जाम देले जानि परिबो हाँ फोटो इफेक्ट आसीबो कारण देख कहीं कि मुझे फोटो इफेक्ट 100% आसीबो कारण देख आमर तीनटा लॉन्ग क्वेश्चन अल्टरनेटिव हेकी पड़े गोटे वर्ष रेडियो एक्टिविटी पढ़ले गोटे वर्ष बोर शॉटिंग मॉडल पढ़े गोटे वर्ष फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़े जेहेतु तुम रेडियो एक्टिविटी कोर्स रु कटि जाइछि से आर वर्ष फोटो जो बोर शॉटिंग मॉडल पड़ जाइछि तेणु ए वर्ष फोटो इफेक्ट पढ़ियार चांसेस अछि आउ कार कोन बुझियार अछि कि लाइव सेशन को एंड करबा हाँ भोकेशनल पिलांगर पढ़ु कौन असुविधा नहीं बारंबार कहूँ पिला भोकेशनल पिलांगर पढ़ु किसी असुविधा नहीं हाँ निश्चित रूपे तुम जी सब क्वेश्चन देख लॉन्ग क्वेश्चन जहाँ जहाँ कही तापर ऑब्जेक्टिव भी डिस्कशन करदे बुझे ऑब्जेक्टिव डिस्कशन करदे पर दिन ऑब्जेक्टिव डिस्कशन करिया परीक्षा जस्ट पूर्व दिन ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल डिस्कशन करदेले बुझिपारे तुम हैबिट हो आराम जाए परीक्षा रे भल मार्क आसो भोकेशनल पिलांकर अलग पैटर्न तुम अलग पैटर्न क्वेश्चन तांको संगे तमर किछि लिंक नाही जदि तांकर पढिছে तमर पढिबो नेले सेमति भी किछि माने नाही हां काली क्लास हबो लॉन्ग क्वेश्चन कहि सल्लानी ऑलरेडी
तम ऊपर डिपेंड करे तुम को रेट रे प्रैक्टिस करछो केमती कोन प्रैक्टिस करछो 80 रहबे कि नहीं तुम ऊपर डिपेंड करे तुम जदी भल से प्रैक्टिस करतो जति एति क्वेश्चन को आउची ऑब्जेक्टिव जदी प्रीवियस 10 वर्ष रा थरो थिबो ताले निश्चित रूप 80 प्लस रहि पाइबो। हो ठीक अछि पिलाने आज रे लाइव सेशन को एट एंड करबा समस्त लाइव क्लास रे जॉइन करथिबारु समस्त को हृदय धन्यवाद। हो पिला माने जति जति क्वेश्चन दिया होची भल से प्रैक्टिस करो। ऑप्टिक्स रे इंपोर्टेंट क्वेश्चन कल सब डिस्कशन कर देबा कैपेसिटेंस ऑप्टिक्स जो न्यूक्लियर एटॉमिक फिजिक्स जो आछि प्रॉब्लम छोटे छोटे डायरेक्ट प्रॉब्लम से सब को प्रैक्टिस कर दो बुझिला। हां पीडीएफ आज अपलोड कर देबे। और टुडे दिस मच थैंक यू हैव अ नाइस डे थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग दिस लाइव क्लास।